Hey there everyone. In this video we are going to study about a very interesting topic that is about taxes. Okay, so let's see what the question is about. The first question they have asked is to state the canons of taxation, right? So first thing first, so we will start with canons of taxation. Now in order to understand canons of taxation, let's first know what are the types of taxes here we are dealing with, right? So there are two classification of taxes, right? Broad classification, that is direct taxes and indirect taxes. Now what are direct taxes? Direct taxes are those taxes which are collected directly from the person who is burdened with, the tax which cannot be passed on to another individual. Okay, so basically type of tax where the impact and incidence of tax are on the same person. Okay, so impact and incidence of the impact and incidence of tax on same person, that is the initiation, and the initiation, the one who is responsible for paying is the one who ends up paying the tax, is the direct tax. So that is the impact and initiation of tax. So what are the examples? Income tax, capital gain tax, right? Security transaction tax, corporate tax, wealth tax, etc. So these are all the types. Next one is about indirect taxes. So in this case, the impact and incidence of tax on different person. That means the initial point, that is the one who is responsible to pay that tax, can shift the tax to some other person's shoulder. So shifting of that responsibility, that means initially suppose it was on me, but I have shifted it on you. So finally you are the one who is paying. So I was the one with the initial responsibility, you are the one who ends up finally paying it. So two different person, impact and incidence of taxation. So that is indirect taxes. Example, sales tax, service tax, custom duty, excise duty, value added tax, etc. So this is about direct and indirect taxes. Now let's know study about the canons of taxation. So what do you mean by canon? Canons means basically characteristics or quality of what? Taxation. That means whenever an authority is asking you to pay tax, or the candidate or individual who is paying tax is liable to pay tax, so there should be certain rules and regulations, and that should be what? Qualitative, and there should be certain characteristics behind this taxation system. So that is canons of taxation. So what are the different qualities or properties, or let's say canons of taxation? So there are four important and most first it was given by Adam Smith. So what are the first four most important canons, qualities or characteristics of taxation are as follows. So number one is canons of equality or equity. Okay, so what is the meaning here? Canons of equality and equity means what? So taxes should be levied such that everyone should pay equal taxes. Okay, now अगर सब लोग इक्वल टैक्स पे करने लगे तो सबका इनकम या एबिलिटी तो सेम नहीं है ना, तो हर कोई अगर अपने एबिलिटी के हिसाब से टैक्स पे करे तो तब जाके वहां पे क्या होगा? जस्टिस होगा, यानी कि इक्विटी होगा. इक्वालिटी मतलब कि चाहे किसी के पास 100 रुपए हो या चाहे किसी के पास 1000 रुपए हो, सबको 10 रुपए देना है, तो ये हो गया इक्वालिटी. लेकिन जिसके पास 100 रुपए है वो कुछ ना दे, और जिसके पास 1000 रुपए है वो अगर 100 रुपए का टैक्स दे, तो ये हो गया इक्विटी. मतलब कि जिसके पास जितना जरूरत है उस हिसाब से उससे उतना टैक्स लीजिए, वो हो जाता है हमारा इक्विटी. जरूरत के हिसाब से इक्विटी, और जरूरत को ना देख के सबको सेम देना, इक्वालिटी मेंटेन करना, वो हो जाता है इक्वालिटी. तो यहाँ पे कैनन्स ऑफ इक्वालिटी या इक्विटी का मतलब है कि इक्वालिटी इन द सेंस कि टैक्स इस तरीके से हम लोग को ऑथोरिटी को लोगों से पूछना चाहिए कि कितना अमाउंट टैक्स दे, सच दैट टैक्स देने के बाद हर एक का सैक्रिफाइस जो है वो इक्वल हो. मतलब कि जिसके पास ज़्यादा है वो ज़्यादा
दे और जिसके पास कम है वो कम दे, अल्टीमेटली टैक्स देने के बाद उनका जो सैक्रिफाइस है वो इक्वल होना चाहिए। तो उस सेंस में कैनन ऑफ इक्वालिटी है, और अगर वो बरकरार रहेगा तो सब में इक्विटी भी क्या होगा, that will also be solved. So that is why it is called canon of equality or equity. So basically ये किस चीज पे बेस्ड होना चाहिए, ability to pay पे, right? दूसरा हो गया हमारा canons of certainty. certainty मतलब कब देना है, कितना देना है, किसको देना है, ये सब टैक्स पेयर्स को पता होना चाहिए। और नॉट ओनली दैट, जो ऑथोरिटी है उनको भी पता होना चाहिए कि वो कितना टैक्स वहाँ पे लागू कर रहे हैं, सच दैट उनके पास सर्टेनिटी हो कि उनको कितना रेवेन्यू कलेक्शन चाहिए। सो दिस इज अबाउट सर्टेनिटी, टू नो what, when and how by both the parties, the one who is paying the tax and the one who is the authority. तीसरा है हमारा कैनन ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी यानी कि पैसे की बात हो रही है, यानी कि ये जो टैक्स कलेक्शन है, ये टैक्स कलेक्शन शुड बी डन in the most cost effective manner, in the sense the cost of collecting tax should be minimum. कितने मिनिमम कॉस्ट में टैक्स कलेक्शन हो सकता है, मतलब अथॉरिटी को ज्यादा खर्चा नहीं करना है, क्योंकि खर्चा ज्यादा हो जाएगा तो फिर रेवेन्यू ज्यादा कैसे होगा, है ना। तो इसीलिए रेवेन्यू कलेक्शन करते वक्त ऐसे ध्यान में रखना है कि उस कलेक्शन के पीछे खर्चा कम हो, तो इकोनॉमी का ध्यान रखा जाए। सो दैट इज आवर कैनन्स ऑफ इकोनॉमी। And the last one is canons of convenience, मतलब कि कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, इजीली होना चाहिए, कोई हैसल नहीं होना चाहिए, हैसल फ्री तरीके से कंट्रीब्यूशन हो जाना चाहिए फ्रॉम द टैक्स पेयर्स टू द अथॉरिटी। तो ये चार जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनन्स ऑफ टैक्सेशन है, जो कि एडम स्मिथ ने दिया था। इसके अलावा बाद में मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इन चार कैनन्स के साथ और भी एक्स्ट्रा कुछ कैनन्स ऐड किए थे, जैसे कि कैनन्स ऑफ प्रोडक्टिविटी, कैनन्स ऑफ इलास्टिसिटी, canons of simplicity and canons of diversity. So this is all about direct and indirect taxes and the different canons of collecting it, that is taxation. Now if we look at the question, we have another question.